हेलो दोस्तों, मैं हूं तन्मय भट्ट और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल तन्मय भट्ट में। दोस्तों हमने C++ के पार्ट 4 में हमने देखा था कि प्राइवेट मेंबर्स है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, पब्लिक मेंबर्स है, एक्सेस मॉडिफायर्स है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में। वो कैसे यूज होता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं C++ क्लास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पहले बात करते हैं। क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर वी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास. A constructor will have exact same name as the class and it does not have any return type at all. Not even void constructors can be very useful for setting initial values for certain member variables. Following example explains the concept of constructor has included iostream using namespace s3. बाद में क्लास लाइन क्लास बनाया है, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, वो वर्ड सेट लेंथ यहाँ पे फंक्शन बनाया है, डबल लेंथ ब्रैकेट के अंदर डबल लेंथ लिखा हुआ है और डबल गेट लेंथ इसलिए वर्ड, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है वो है लाइन और ब्रैकेट, और फिर से प्राइवेट मेंबर फंक्शन बनाया है इधर और डबल लेंथ फंक्शन यहाँ पे, और वापस मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर यानी कि लाइन, वो बीच में रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी, लाइन और ब्रैकेट के अंदर वर्ड, सी आउट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड एंडल, वर्ड लाइन रिजोल्यूशन ऑपरेटर सेट लेंथ और ब्रैकेट के अंदर डबल लेंथ. लेंथ इक्वल टू लेंथ, डबल लेंथ रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट लेंथ वॉइड और रिटर्न लेंथ. मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम इंटीजर मेन लाइन और लाइन, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है सेट लाइन लेंथ, लाइन डॉट सेट लेंथ 6.0, उसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी है, सी आउट लेंथ ऑफ लाइन, लाइन डॉट गेट लेंथ ब्रैकेट और एंडल रिटर्न 0. आउटपुट देखिए उसका, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ ऑफ लाइन 6. अब हम बात करते हैं दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में. अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट have any parameter, but if you need a constructor can have parameter. This helps you to assign initial value to an object at the time of its creation as shown in the following example. Has include iostream using namespace s3. क्लास यहाँ पे एक बनाया है क्लास लाइन, पब्लिक एक्सेस वर्ड सेट लेंथ डबल गेट लेंथ ब्रैकेट के अंदर void line double length. This is the constructor private member access modifier double length. यहाँ पे फिर से मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर यानी कि लाइन रिजोल्यूशन ऑपरेटर डबल लेंथ, सी आउट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ इक्वल स्पेस लेंथ और एंडल लेंथ इक्वल टू लेंथ, वर्ड लाइन रिजोल्यूशन ऑपरेटर सेट लेंथ डबल लेंथ इक्वल टू लेंथ, और डबल लाइन रिजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पे बनाया गेट लेंथ वॉइड रिटर्न लेंथ, फंक्शन इंटीजर मेन लाइन और लाइन 10.0 गेट इनिशियल सेट लेंथ, see out length of line dot get length ender, set line length again line dot set length 6.0, see out length of line space line dot get length ender return 0.
और उसका आउटपुट देखिए, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ इक्वल टू 10 और लेंथ ऑफ लाइन 10 और लेंथ ऑफ लाइन 6। अब हम बात करते हैं यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट टू इनिशियलाइज फील्ड्स। In case of parameterized constructor, you can use following syntax to initialize the fields. Line resolution operator, line double len, length or len, cout object is being created, length equal space len or handle. Above syntax is equal to the following syntax. Line resolution operator, line फंक्शन यहाँ पे बना है डबल लाइन, सी आउट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, लेंथ इक्वल टू स्पेस लेन और एंडल, लेंथ इक्वल टू लेन। इफ फॉर अ क्लास सी यू हैव मल्टीपल फील्ड एक्स वाई जेड etc to be initialized, then can use same syntax and separate the fields by comma as follows. C resolution operator, C double A double B double C comma colon X A X Y B or Z C. In C++, the code snippet you provided is a constructor for a class named C. It appears to be using inheritance to initialize the base class X, Y, and Z with the value A, B, and C, respectively. Here's an example of how you can implement this is in C++. Has include IOST class X public access X double A or colon X value A curly bracket double X value, class Y public Y double B colon Y value B double Y value, class Z public Z double C colon Z value C और डबल Z value, क्लास C यहाँ पे इनहेरिटेंस किया है, क्लास C पब्लिक X पब्लिक Y और पब्लिक Z को पब्लिक C डबल A डबल B डबल C X A Y B Z C. Integer main function C my C instance 1.23 4.56 7.89 cout X value my C instance dot X value handle my C instance dot Y value handle cout Z value my instance dot Z value और handle और बाद में return 0. In this example we have three classes X, Y, and Z, each with a single member variable and a constructor to initialize that member. The class C inherits publicly from these three classes and uses their constructors to initialize the base class members X value, Y value, and Z value. Finally, in the main function we create an instance of class C and access the values of its members X value, Y value, and Z value. अब हम बात करें दोस्तों द क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में. A destructor is a special member function of a class that is executed whenever an object of its class goes out of scope or whenever the delete expression is applied to a pointer to the object of that class. A destructor will have exact same name as the class prefix with a tied, and it can neither return a value nor can it take any parameters. Destructor can be very useful for releasing resource
sees before coming out of the program, like closing files, releasing memories, etc. हैज इंक्लूड आईओएसटी म्यूजिक नेम स्पेस एसटीडी क्लास लाइन क्लास ने का नाम दिया है क्लास लाइन पब्लिक वॉइड सेट लेंथ फंक्शन बना है डबल लेंथ डबल गेट लेंथ वॉइड लाइन और लाइन लाइन ब्रैकेट है वो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर है और नीचे वाला है जो डैश लाइन ब्रैकेट है वो डिस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन है प्राइवेट एक्सेस डबल लेंथ line resolution operator line void of cout object is being created handle line destructor वाला line void or cout object is being deleted handle void line resolution operator set length double length equal to length double line resolution operator get length void return length integer main line or line dot set length 6.0 cout length of line dot get length handle return 0 उसका output object is being created length of line 6 और object is being deleted। अब हम बात करते हैं दोस्तों C++ के कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। The copy constructor is a constructor which creates an object by initializing it with an object of the same class which has been created previously. The copy constructor is used to initialize one object from another of the same type, copy an object to pass it as an argument to a function, copy an object to return it from a function. If a copy constructor is not defined in a class, the compiler itself defines one if the class has pointer variables and has some dynamic memory allocations. Then it is a must to have a copy constructor. The most common form of copy constructor is shown here: class name, const class name and object और बाकी का body of constructor। Here object is a reference to an object that is being used to initialize another object. Has include IOStream using namespace std class line public integer get length void line integer length simple constructor line const line dot and object copy constructor dash line destructor और private access integer star ptr line resolution operator line integer line cout normal constructor allocating ptr handle allocate memory for the pointer ptr equal to new integer star ptr equal to length line resolution operator line const line and object cout copy constructor allocating ptr handle ptr equal to new integer star ptr equal to end object ptr copy the value उसकी वैल्यू को कॉपी किया जाता है run line resolution operator line void cout freeing memory handle delete ptr integer line resolution operator get length void return star ptr void display line object cout length of line object dot get length handle integer main line 10 display line return 0 उसका आउटपुट देखिए नॉर्मल कंस्ट्रक्टर allocating ptr copy constructor allocating ptr length of line 10 freeing memory और freeing memory। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं C++ friend functions के बारे में। A friend function of a class is defined outside the class scope, but it has the right to access all private and protected members of the class, even though
The prototypes for friend function appear in the class definition. Friends are not member functions. A member friend can be a function template or a member function or a class or class template, in which case the entire class and all of its members are friends. To declare a function as friend of a class, precede the function prototype in the class definition with keyword friend as follows: class box double with public double length friend void print with box or box void set with double or function double with. अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स के बारे में. बाय डिक्लेयरिंग अ फंक्शन मेंबर एज स्टैटिक यू मेक it independent of any particular object of the class. A static member function can be called even if no objects of the class exist, and the static functions are accessed using only the class name and the scope resolution operator. A static member function can only access static data member or the other static member functions and any other functions from outside the class. Static member functions have a class scope and they do not have access to this pointer of the class. You could use a static member function to determine whether some objects of the class have been created or not. Let us try the following example to understand the concept of static function members. Has include IOStream using namespace string, static integer object count, constructor definition, box double L equal to 2.0 double B, 2.0 double A, 2.0 cout, constructor call and length equal to L, breadth B, height equal to H. Increase every time object is created, object count plus plus. Double volume, return length, multiplication breadth, multiplication height, static integer get count, return object count. Private double length of box, double breadth of box, or double height of a box. Initialize static member of class box, integer box resolution operator object count equal to 0, integer main void cout initial stage count box resolution operator get count ender. Box 1 3.3 1.2 1.5 declared box 1, box 2 8.5 6.0 2.0 declare box 2. Cout final stage count box resolution operator get count और एंडल रिटर्न 0. उसका आउटपुट देखिए, इनिशियल स्टेज काउंट 0, कंस्ट्रक्टर कोल्ड फाइनल स्टेज काउंट 2. तो दोस्तों हमने आज बात की कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में, कैसे यूज होता है, किस में यूज होता है, उसके बारे में आज डिस्कस किया. तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.